I do not remember the name of the movie, but I am sure in that movie the protagonist had made two important statements. First, we do not break a rule, we just change it. And the second one was, promises are meant to be broken. तबे एही स्वाधीनता शिक्षक मानकर नाही. Teachers never break promises made to their students. So friends, as promised earlier in my previous video lesson, in this video I have to deal the elements of communication as promised earlier. Bartaman more prashna to all my students, do you want to make your communication effective? Then you must learn about the main elements of interpersonal communication. भाव विनिमयर मुख्य उपादान गुड़िक कौन से गुड़िक संपर्क रे जानिबा वांछनीय जदि आपण आपनकर कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रभावशाली करिवा को चाहू. There are 6 elements of interpersonal communication. First, the communicators. Second, the message. Third, noise. Fourth, feedback. Fifth, context. Sixth, channel. प्रथम कथा होची कम्युनिकेटर्स. प्रथम उपादान रूपे आमे कम्युनिकेटर्स बा संचारक संबंध रे फर्स्ट आमे जानिबा. The communicators are the people involved in the communication process. भाव विनिमय प्रक्रिया बा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस रे अंश ग्रहण करथुबा प्रत्येक व्यक्ति विशेष को आमे कम्युनिकेटर्स बोली कहू. 2 or more communicators are essential for communication to take place. सर्वनिम्न 2टी कम्युनिकेटर्स उपलब्ध जदि न होंती तबे कम्युनिकेशन होई परिबो नाही. अर्थात कम्युनिकेशन प्रोसेस संगठित होबा पई 2 बा अधिक बा ततोधिक कम्युनिकेटर्स कर आवश्यकता रहिछि. In many books, बहुत गुडे बही रे communicators are described as senders and receivers of message. अनेक बही रे communicators को sender एवं receiver of message बोली लिखा जाइछि. Do not get confused if there is no mention of the word communicators. In some books, in place of them, there will be the words like senders or receivers, which mean the same thing. किंतु मो वीडियो रे I choose to use the word communicators because in communication, both sending and receiving of message or messages take place with all the parties involved. Dear friends, the second element of interpersonal communication is the message. Message कहले आमे संदेश बा वार्ता को बुझू. The message is the idea that is conveyed through written, oral, symbolic or non-verbal expressions. संदेश होची सेही चिंताधारा जहा लिखित रूप रे मौखिक रूप रे संकेत बा अणवाचनिक अभिव्यक्ति मानक द्वारा संप्रेषित कम्युनिकेटेड होता है. एठारे अणवाचनिक अभिव्यक्ति बा non-verbal expression means body, gestures, silence, size, sounds, etc. शरीर अंगभंगी, नीरवता, दीर्घश्वास शब्द आदि अणवाचनिक अभिव्यक्ति को बुझाए. The next element is noise. साधारण अर्थ रे noise कहले हमें कोलाहल को बुझू. But noise has a special meaning in communication theory. Communication theory रे noise रे को भिन्न अर्थ रहिछि. It refers to anything that distorts the message. भाव विनिमय बा कम्युनिकेशन प्रक्रिया रे जहा किछि भी संदेश को विकृत करे ताहा को नॉइज बोली ग्रहण करा जाए. साधारणतः नॉइज रो प्रभाव रे व्हाट इज रिसीव्ड बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इंटेंडेड बाय द स्पीकर. प्रेरक जो संदेश देता है नॉइज प्रभाव रे ता इप्सित अर्थ ठारू भिन्न अर्थ प्रकाश करता है. Examples of noise can be background noise, distractions, cultural differences, inappropriate body language or complicated words. दृश्यपट पश्चात कोलाहल, background noise, मनोयोग अभाव, संस्कृतिगत भिन्नता, अनुपयुक्त अंगभंगी, कठिन शब्दर व्यवहार केतक नॉइज उदाहरण अटे. एसबू कारक दिस फैक्टर्स अर्थ को सठिक भावे बुझिबारे अंतराय सृष्टि करे. तेणु ए सबु को नॉइज बोली कहा जाए. यहाँ पर एलिमेंट फीडबैक बा प्रतिपुष्टि
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रो अन्य एक उपादान मोर पूर्व वीडियो रे मु सुचाई देछि जे फीडबैक इज नथिंग बट द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न्स आपण माने वीडियो देख साला पर जो लाइक करछंती जो कमेंट्स दोछंती दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फीडबैक फीडबैक इज नथिंग बट द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न्स संदेश पाइला पर प्रापक व रिसीवर जो प्रतिक्रिया प्रदान करे ताहा फीडबैक को बुझाए तेणु कहा जाए फीडबैक इज ऑल्सो द रिसीवर्स रिएक्शन और रेस्पॉन्सेस verbal statements like could you repeat the point please or subtle facial expression change of posture provides feedback receiver छोट छोट अंग भंगी मध्य फीडबैक दे पारे जो फ्रेंड्स वर्तमान आमे जानिबा context is the setting where the message is said जो परिप्रेक्ष्य रे बा परिस्थिति रे आमे मैसेज को संचरण करि थाउ that is called context a message is very much influenced by context. Context helps establish meaning and can influence what is said and how it is said. Context बहु मात्रा रे भाव अर्थ को प्रभावित करे. Context is both physical as well as social. Context उभय भौतिक परिप्रेक्षी और सामाजिक परिप्रेक्षी को बुझाए. The room, the office, the outdoor where the information is said is the physical context. जो कोठरी बा ऑफिस गृह रे मेसेज बा तथ्यर विनिमय घटे ता physical context अंश विशेष अपरपक्ष रे the emotional climate, the participants एक्सपेक्टेशंस अर्थात आवेगिक परिवेश और अंशग्रहणकारी मानकर आकांक्षा सोशल कंटेक्स्ट को सूचाए रिलेटिव स्टेटस एंड रोल्स आल्सो फॉर्म द सोशल कंटेक्स्ट प्रतिभागी मानकर आपेक्षिक पदमर्यादा और दायित्वबोध मध्य सोशल कंटेक्स्ट रो अंश विशेष अटे वर्तमान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रो शेष उपादान चैनल संपर्क रे जानिबा Channel is the physical means by which the message is transferred from one person to another. Channel ହେଉଛି ଏକ ଭୌତିକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ channel ବା ମାଧ୍ୟମ both audio and visual in a face to face context the channels which are used are speech and vision मुहामुही भाव विनिमय प्रक्रिया रे चैनल रे संभाषण और दृश्यर व्यवहार हुए In case of telephone conversation, the channel is limited to speech only. सेठारा देखिबाटा नाही. There is no visual. जदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न करी टेलीफोन रे कथाबार्ता होंती तबे मु कहबी केवल गोटे चैनल व्यवहार हुए ता होछि संभाषण. Dear friends, in my next video I will discuss vertical communication, horizontal communication and grapevine communication. Think this is just the beginning of a new relation. Subscribe to my channel APN's Education and press the bell icon to stay connected. Thank you.